हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे लैंडमार्क केसेस रिलेटिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज वी नो, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया है। बट कुछ एक स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैम वी वांट अ वीडियो ओवर अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1 और 2 वीडियोज़ में मैं आपका ये टॉपिक कवर करूँगी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज विद इन देयर jurisdiction. The power to amend the constitution is only with the parliament and not with the state legislative assemblies. जैसे कि हमें पता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास लॉ बनाने की पावर है, बट ओनली विद इन द जुरिस्डिक्शन, नॉट बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन. यस, बट power to amend the constitution is only with the parliament and not with the state legislative assembly. However, this power of the parliament is not absolute in nature. Means आप समझिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स आर not absolute in nature. There are certain reasonable restrictions. Similarly, basic जो पावर लॉ बनाने की पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, और अमेंड करने की पावर जो हमारे सिर्फ पार्लियामेंट के पास है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो लिमिट एब्सोल्यूट नहीं है. मीन्स देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ओवर दैट. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर any law that it find unconstitutional void. As per the basic structure doctrine, any amendment that try to change the basic structure of the constitution is invalid. ऐसी कोई भी अमेंडमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करने की या फिर उसे हिलाने की या चेंज करने की ट्राई कर सकती है, उसे इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है. नाउ इन अ केशवानंदा भारती केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, इन द केशवानंदा भारती केस it was held that the basic structure of the constitution could not be abrogated even by a constitutional amendment. The judgment listed some basic structure of the constitution. First one is supremacy of the constitution. Second one, unity and sovereignty of India. After that, democratic and republican form of government. Then federal character of the constitution, secular character of the constitution, and last one is separation of power and individual freedom. The judgment listed some basic structure of the constitution. Over time, many other features have been added to the basic structures. Some of them: rule of law, judicial review, parliamentary systems, rule of equality, free and fair elections, power of the Supreme Court under Article 32, 136, 142 and 147, and the last one is power of the High Court under Article 226 and 227. Any law or amendment that violate these principles can be struck down by the Supreme Court on the ground that they destroy or violate the basic structure of our constitutions. Clear? Then evaluation of the basic structure concept.
the concept of the basic structure of the constitution evolved over time. So many times, or we can say that in Shankari Prasad case. Please note down, firstly we discuss Keshwananda Bharati case, then Shankari Prasad case. In this case, Supreme Court contended that Parliament power of amending the Constitution under Article 368 includes the power to amend the fundamental right guaranteed in Part 3. After that, Sajjan Singh case in year 1965. In this case, Supreme Court held that Parliament can amend any part of the Constitution including the fundamental rights. Secondly, it is noteworthy to point out that two different judgments in the case remarked whether the fundamental rights of the citizen could become a plaything of the majority party in the parliament. After Shankari Prasad case or Sajjan Singh case, very interesting and famous case, Golaknath case. The facts of the Golaknath case we will discuss in our next video.